This is Ordos, a Chinese city जिसमें हाई राइज अपार्टमेंट्स, स्काई स्क्रेपर्स, मैसिव आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, स्टेडियम्स, वेल कनेक्टेड रोड्स, ऑलमोस्ट सब कुछ है. बट वन थिंग इज मिसिंग, पीपल. Yes, this city, which almost looks like a dream, is empty. और सिर्फ ऑर्दोस नहीं, चाइना में ऐसी 50 सिटीज और ऑलमोस्ट 64 मिलियन अपार्टमेंट्स हैं जहां कोई नहीं रहता. द क्वेश्चन इज, वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री और इतनी माइटी इकोनॉमी होने के बाद भी व्हाई ऑफ ऑल प्लेसेस चाइना हैज एंटायर सिटीज विदाउट पीपल. The most populated nation on earth is building houses, districts, and cities with no one in them. There are more homes than people who need them. Some economists warn the country's building boom never delivered real prosperity. The property market is in pretty serious trouble. The entire real estate market in China is a disaster waiting to happen. हाय गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लाउंज. और आज के एपिसोड में हम चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की एक ऐसी माइंड बॉगलिंग स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसने न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस जैसी सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पीछे छोड़ दिया. लेकिन आज वही इंफ्रास्ट्रक्चर बूम कैन पोटेंशियली लीड टू द कोलैप्स ऑफ द एंटायर चाइनीज इकोनॉमी. It was 2008, one of the darkest years in the history of mankind. The worst day on Wall Street since the crash of 1987. The Dow traders are standing there watching in amazement, and I don't blame them. We're now down The world was suffering through a terrible financial crisis. 43%. Almost everything there completely wiped out. In the NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. यूएस के कुछ ऐसे बड़े बड़े बैंक्स बैंकरप्ट हो चुके थे, which brought millions on roads, not only for protest, but because they had nowhere to go. उस एज में जहां लोग अपनी रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, suddenly they lost their entire life savings and were now rendered homeless. और जहां वर्ल्ड की हर कंट्री एक सिवियर रिसेशन को गो थ्रू कर रही थी, चाइना was getting worried. पिछले 3 डेकेड्स में चाइना ने अपने लिए वर्ल्ड में एक इररिप्लेसेबल पोजीशन बना ली थी with its cheap labor and massive manufacturing factories, which ensured that they grew at an unprecedented growth rate of 9% every year. China had finally arrived as an export-oriented giant. From the US to Europe to Russia to India, everybody was importing from China. और चाइना का सबसे बड़ा क्लाइंट था US, which was importing $300 billion of Chinese goods every year. लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जब ये सारी कंट्रीज इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही थी तो चाइना से इंपोर्ट कौन करेगा. चाइना के लिए ऐसा बोला जाता था कि उसकी ग्रोथ यूएस और यूरोप की ग्रोथ पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर ये इकोनॉमीज ग्रो करेंगी तो चाइना के एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे और अगर नहीं तो नो एक्सपोर्ट्स. बट चाइना वांटेड टू प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग. They wanted to show everyone that even if the world was undergoing recession, the Chinese would continue to thrive. As the exports to Western countries fell dramatically, China started looking for growth opportunities not outside but within its own economy. और एक इकोनॉमी में सबसे बड़ी growth opportunity होती है infrastructure investments, building roads, malls, apartments, etc. This is because these projects require the services of almost every industry: steel, cement, paints, ceramics, etc. मतलब एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इकोनॉमी की बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए बेनिफिशियल होता है. एंड सो चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी में $600 बिलियन का एक्सपेंडिचर प्लान किया, ऑल डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अनलाइक डेमोक्रेसीज, हम ये जानते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है विद अ वन पार्टी रूल. 1949 से जब से ये रूल एस्टैब्लिश हुआ है, चाइना हैज बीन अ लैंड ऑफ SOEs, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस. मतलब चाइना में ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री इज मैनेज्ड बाय ह्यूज कंपनीज दैट आर ओन्ड बाय द स्टेट. इट वाज लेटर इन 1979 जब चाइना में थोड़े रिफॉर्म्स आने शुरू हुए, तब उन्होंने इनमें से कुछ SOEs को प्राइवेटाइज भी किया and some of them were sold to rich elites who were close to Chinese politicians. However, all of them together work in a nexus and state directly or indirectly always has control. And regardless to say, a company that comes under the state is also protected by the state. For years,
चाइना अपनी SOEs को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करता है बाय गिविंग देम सब्सिडीज, कंसेशंस, प्रोजेक्ट ऑर्डर्स, सो मच सो दैट इन कंपनीज को चाइना अपने नेशनल चैंपियंस बोलता है। बाय 2010 द टॉप 10 SOEs had a combined profit of $50 billion. And so these $600 billion जो चाइनीज गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाली थी, that was an attempt to keep the profits of these companies running, including both the raw material supplying SOEs and the real estate developers. There was one small problem though. चाइनीज कंपनीज जिस स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान कर रही थी वो सिर्फ $600 बिलियन से नहीं बन सकता था। इट रिक्वायर्ड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन अब इतना पैसा उन्हें चाइना का ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम तो नहीं दे सकता था, तो दे हैड टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। दैट्स व्हेन दे केम अप विद अ मास्टर प्लान एंड डिवाइस्ड अ न्यू स्ट्रेटजी विद द हेल्प ऑफ द चाइनीज बैंकिंग सिस्टम, जिससे उनको फंड्स बैंक्स या गवर्नमेंट से नहीं डायरेक्टली सिटीजन से मिल सके। दे कॉल्ड इट WMPs और Wealth Management Products. Basically, a WMP would run like an investment vehicle for the people. इसमें बैंक्स अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ये पिच करेंगे कि वो इन WMPs में इन्वेस्ट करें, और जब इन क्लाइंट्स की मनी से एक डिसेंट पूल कलेक्ट हो जाएगा तो ये फंड्स बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में एलोकेट किए जाएंगे। इन एक्सचेंज दीज WMP इन्वेस्टर्स वुड गेट हाई रिटर्न्स जो उनकी नॉर्मल सेविंग्स रेट से डबल या ट्रिपल होंगे। धीरे धीरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स WMPs के हाई रिटर्न से अट्रैक्ट होने लगे एंड द मनी स्टार्टेड पोरिंग इन। 4 years लेटर इस स्टिमुलस के रिजल्ट्स चाइनीज प्रोजेक्ट्स में दिखने लगे। नैनजिंग चाइना की लार्जेस्ट सिटीज में से एक है और इसी सिटी के साउथ में एक डिस्ट्रिक्ट है कॉल्ड जियांजिंग। दिस डिस्ट्रिक्ट नाउ हैड 7 न्यू सिटीज। इन 7 में से हर सिटी के पास अपने मॉल्स हैं, 5-star होटल्स हैं, लेक्स, गोल्फ कोर्सेज, हाउसिंग, स्काईस्क्रेपर्स, सब कुछ है। और इन सारी सिटीज को एक बहुत ही क्रूशियल प्रोजेक्ट कनेक्ट करता है, नैनजिंग साउथ रेलवे स्टेशन, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशंस, जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में बनाया गया। दिस मैग्निफिसेंट स्टेशन इज स्प्रेड अक्रॉस 4.9 million square feet of floor space with over 128 escalators. The trains here are super fast with a top speed of over 305 kilometers per hour. और सिर्फ यही नहीं, चाइना एक के बाद एक नई सिटीज बनाता गया। In fact, China has its own copied versions of Paris, London and Manhattan. It is said that between 2010 to 2013 जितना सीमेंट चाइना ने यूज किया उतना US ने पूरी 20th सेंचुरी में भी नहीं किया था। इन प्रोजेक्ट्स के स्केल को देखकर एक विजिटर का मोस्ट ऑब्वियस रिस्पॉन्स वुड बी नथिंग बट स्टन्ड साइलेंस। लेकिन एक छोटा सा इशू था, ऑल दीज इंप्रेसिव फैसिलिटीज वर एम्प्टी। चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बूम अब इनक्रेडिबल से वेस्टफुल बनता जा रहा था। पीपल वुड मार्वल एट द अपार्टमेंट्स बट नो वन वुड लिव देयर। ऐसा लग रहा था जैसे चाइनीज रियल एस्टेट डेवलपर्स वर लिविंग इन एन इल्यूजन। इवन जब पॉलिटिशियंस से पूछा जाता था अबाउट द ओवर कैपेसिटी इन द इंडस्ट्री, तो दे यूज्ड टू हैव ओनली वन आंसर, वी आर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर for the future. Very often they would be found pointing towards an unfinished hotel, telling people कि this hotel will be the meeting point for global conferences, to a laboratory कि यहाँ वर्ल्ड की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बनेगी, and to sports stadiums saying that one day Olympics will be played here in this place. Now focus on the part where the real estate companies said कि ये projects long term के लिए, long term. If you remember, अभी थोड़ी देर पहले ही I told you कि इन प्रोजेक्ट्स को फंड WMP से किया जा रहा था, जिसके एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। Hear this out, because this is the most fatal flaw of this entire process. While the projects जिसमें WMPs फंड्स एलोकेट किए जा रहे थे वो तो लॉन्ग टर्म थे, मतलब उनके रिटर्न्स शायद उनके बिल्ड होने से 10 years बाद तक आएंगे, when the people start living there, और वो एक सिटी से हसलिंग बसलिंग सिटी बन जाए।
लेकिन WMPs की liabilities मतलब interest payments या even for that matter the principal payments that the investors were waiting for, वो तो short term है. This is called an asset liability mismatch where the assets, that is these projects and their returns, are long term but the liabilities, that is the interest and principal payments, are short term. Often WMP instruments सिर्फ 6 months मेच्योरिटी के ही होते थे. In fact, WMP के पॉपुलर होने का रीजन यही था that these instruments yielded high returns as much as 12% in short term as compared to only 1 to 2% in bank deposits. Now the question is, if there was a mismatch between the return and the interest payments, how did the companies pay their investors? From 2009 onwards, जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का स्केल बढ़ा, the number of WMPs skyrocketed from a mere 700 in 2007 to a staggering 20,000 in 2013. अब अगर किसी WMP की मेच्योरिटी आती थी, then the companies used to borrow funds from the other WMPs, जिससे इन्वेस्टर्स को टाइम पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलता रहे. एंड सो एक WMP की पेमेंट्स करने के लिए कंपनीज बाकी WMPs पे डिपेंड कर रही थी, which means the cycle of interest payments would continue till the time investors WMPs में इन्वेस्ट करते रहे, and the moment they stop, this entire ecosystem will collapse. This is the giant Ponzi scheme the Chinese companies are running today. As of 2021, Chinese companies around $4.4 trillion WMPs के थ्रू रेस कर चुकी हैं. For years, investors have been willingly investing in WMPs because for them, banks उन्हें ये WMPs pitch कर रहे हैं. And so, उन्हें ऐसा लगता है that these banks will protect the investors' money in the same manner as a depositor is protected. This in itself is a big misunderstanding. क्योंकि even though WMPs banks के थ्रू सेल किए जा रहे हैं, WMP से रिलेटेड कोई भी एसेट और लाइबिलिटीज बैंक्स को बिलोंग नहीं करती. The only responsibility a Chinese bank has is to manage the process. That is, to transfer funds from investors to the developers and transfer interest from developers to the investors. और इसके रिटर्न में banks get hefty commissions. And so it wouldn't be too long before people start realizing कि चाइना की पूरी रियल एस्टेट मार्केट एक डेड बबल में है. And once people stop investing in WMPs, developers will run out of cash and it will all come crashing down. In fact, only recently, China's second largest real estate developer, Evergrande, missed interest payments on its WMPs, which has riled up the investors. Evergrande कोई ordinary real estate developer नहीं है. Today, every fourth apartment in China has been built by this company. But right now, इस कंपनी के पास around $300 billion का डेट है. If this company goes bankrupt, or rather if the second largest developer of China goes bankrupt, then you can very well imagine कि आगे क्या होगा. People will panic and everybody will run to banks to pull out their money from WMPs. But to their horror, they will realize कि banks are not responsible to pay them back. It might start with Evergrande, लेकिन धीरे धीरे this domino effect will engulf all the developers in China. और अगर ऐसा होता है तो we might be looking at one of the worst crashes in the history of global economy. The world's second largest economy, China, is in the middle of a property crisis which is showing no signs of abating. The crisis that began with Evergrande real estate defaulting last year is now snowballing into a bigger crisis. If this sector collapses, it could take the entire Chinese economy with it. जहां चाइना आज सुपर पावर बनने की रेस में लगी है, वहां अगर इतना बड़ा क्रैश हुआ तो instead of being the next US, it might become the Japan of 1989. Here's an extensive video we made on the Japan crash. If you haven't watched it yet, go check this out. That's it for today. For this episode, we refer to the book The Death of Money by James Rickards. We'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share and subscribe to the channel.